बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students and most respected Shahzad sir, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the culmination, the final program of our presentation programs, the last one of the list, that is class 10th. Unfortunately, the teacher who was supposed to host the program is busy somewhere else. She is taking her teacher training classes. So I have been asked to invite the wonderful students of class 10 to present their bouquet of programs, a variety of different programs. And the first one of the programs is Tilawat-e-Kalam Pak, and to present some verses of Quran Mubin, let me call on stage Rakib Javed. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Thanks, Rakib. Now it's the turn of a new topic. Hope it's a new one. I hope the topic is on a new subject, because usually here we have seen that the topics presented by our students are usually repetitive. One who presents a topic has already been presented at least a dozen times. Let's hope the topic is a new one, and to present the topic, let me call on stage Shuja Fayaz. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa nasi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur rabbahim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahu aliyyil azim. Muazzaz Principal Sahib व मोहतरम उस्ताद किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुजा फयाज आपके सामने अपना मौजू पेश करता हूँ। मेरा आज का मौजू है तकवा की अहमियत और फजीलत। न तू ज़मी के लिए न आसमां के लिए, न तू ज़मी के लिए न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। कुरान व हदीस नबी में तकवा के मुतालिक बेशुमार आयत व अक़वाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिद हुई हैं। तमाम इबादत का बुनियादी मकसद भी इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और तकवा पैदा करना है।
तकवा दिल की इस कैफियत का नाम है जिसके हासिल हो जाने के बाद दिल को गुनाहों से झिझक मालूम होने लगती है और नेक कामों की तरफ इसको बेतबाना तड़प होती है। बुजुर्गानी दीन और उलमाई किराम का अवलीन वासिफ तकवा रहा है। अपने अफ़आल व अमाल पर गौर व ख्वास करना तकवा को फरूग देता है और रोजा तकवा हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। तकवा असल में वो सिफात आलिया है जो आदमी को इंसान बनाता है। खौफ इलाही की बुनियाद पर इंसान का अपने दामन का सगीर व कबीर गुनाहों की आलूदगी से पाक रखने का तकवा है और अल्लाह ताला और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का हर काम गुनाह कहलाता है। तकवा की अहमियत और फजीलत के मुतालिक कुरान करीम के बाद आयत मुबारक दर्ज झेल मनकूल है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। सूरह अल इमरान में ही दूसरी जगह फरमाता है, फतकुल्लाह फस्ततुम, तो तुम अल्लाह से तकवा इख्तियार करो जितना तुम्हें हो सके। इन आयत के बिना में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। इन आयत करीम के अलावा बहुत सी आयत ऐसी है जिनमें बड़े पुरजोर अंदाज में खालिक कायनात ने बंदों से तकवा का मुतालिबा किया है और कुरान शरीफ में जहां बहुत से जगह तकवा इख्तियार करे पूरा अजर व सवाब का वादा है, वही तरक तकवा पर वईद भी है। गोया मुख्तसर ये समझ लेना चाहिए कि चाहे जो भी फाइल या अमल हो इसमें अगर तकवा ना हो तो वो बेकार है और आखिरत में जन्नत भी यही तकवा के दर्जात के बिना पर दाखिल होंगे। जब इंसान खुदा तबारक व तआला से तकवा रखता है और अपने हर अमाल में खुदा का खौफ रखता है तो इसके नतीजे में इसको बहुत से फवाइद हासिल होते हैं। तकवा के बेशुमार फवाइद कुरान और हदीस में बहुत सी खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। इनमें से चंद फवाइद का दर्ज झेल है। अल्लाह तबारक व तआला को सूरतुल बकरा आयत नंबर 189 में फरमाते हुए देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और अल्लाह से डरते हो तो कि तुम फलाह पा जाओ। जब कोई बंदा अल्लाह से तकवा करता है अल्लाह ताला इस बंदे के अंदर एक कुव्वत अता करता है जिससे वो हक व बातिल, सही व गलत के दरमियान तमीज करता है। शख्स खुदा से तकवा करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने वाले बंदों के मामला में अल्लाह तबारक व तआला तकवा वालों के मुश्किल, मुसीबत और परेशानियों को दूर कर देता है और उनके रिज़्क में बरकत नाजिल फरमाता है। तकवा इख्तियार करने से एक अहम फवाइद ये मिलता है कि अहल ईमान को शैतान, नफ्स और दीगर दुश्मन मसलन मुनाफिकीन के मुकाबले में अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद हासिल होती है। इस तरह इस तकवा के बेशुमार फवाइद कुरान और हदीस में वारिद है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तकवा और परहेजगारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे कि तेरी जवानी रहे बेताब। The time to check your knowledge of science, to check your knowledge of science, and to do the honors, let me call on stage Mehak Manzoor. She will be asking some science questions, and any one of you who knows the answer may raise his or her hand before answering. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mehak Manzoor from class 10th and I want to ask you some questions related to heart. Study of heart is called? It's about one of our body organs called heart. All the questions related to heart. The first one is Right answer. right. How many chambers are there in human heart? Right answer. Which organ is known as graveyard of RBCs? Right answer. बैठ जाओ, वाह, रुको अभी, रुको, इधर दे दो एक सेकंड, इसका कोई मकसद भी निकलना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन सुन तो लो, ये सिर्फ कांच थोद वतन, ये जहन में रखना भी है कि आपकी नॉलेज भी गेन हो रही है। तो इसने तीसरा क्वेश्चन जो पूछा, विच ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स।
वो ऑर्गन बॉडी का जिसे रेड ब्लड सेल्स की कब्र कहते हैं, दैट ऑर्गन इज, क्या बोला इसने? स्प्लीन इज द राइट आंसर. Which instrument is used to measure the blood pressure? The instrument used to measure blood pressure, BP के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? Sphygmomanometer. The answer is sphygmomanometer. Sphygmomanometer. What is the normal systolic blood pressure in humans? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए. What is the normal systolic blood pressure? एक होता है systolic, दूसरा diastolic. Right answer. 120 is the right answer. What is the full form of CAD? CAD. CAD कैपिटल्स में एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म CAD. आप बैठ जाओ 10th वाली पहले, इसको पूछो. CAD. CAD इसमें D डिजीज के लिए है. Right answer. Thank you. Thanks, Mehak. Now let's first do a new program. A new program to be presented first time, I think, in our school. एक प्रोग्राम जो हमारे स्कूल में पहली बार होने जा रहा है. ऐसा फॉर्मेट है. प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं, आपने कन्वर्सेशंस देख ली, टीचर स्टूडेंट की, पेरेंट प्रिंसिपल की, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती रहती है. आज एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसे कहा जाता है डिबेट. नाम तो आपने सुना होगा, डिबेट. लेकिन इस डिबेट का फॉर्मेट इस तरह का है, इसमें कोई टॉपिक होता है, उसे मोशन कहते हैं. एक टॉपिक, यूजुअली ऐसा टॉपिक जो कंट्रोवर्शियल हो. क्या हो? अ टॉपिक विच इज कंट्रोवर्शियल. यानी कि जब दो पार्टीज उसमें बात करती हैं, दो बच्चे, दो लोग, दो बड़े, तो उनको कंट्रोवर्सी होती है. एक उसके हक में बोलता है, एक उसके खिलाफ बोलता है, अगेंस्ट. और आज का जो टॉपिक है इस डिबेट का, उस टॉपिक का टाइटल है फेमिनिज्म. क्या है? 9th वाले ज़हन में रखेंगे, आपको 10th में भी आएगा ये टॉपिक. द टॉपिक इज फेमिनिज्म. और इस फेमिनिज्म के लिए ऑब्वियसली दो बच्चे आगे आएंगे या बच्चियां 10th की. वन हु इज गोइंग टू स्पीक फॉर द मोशन, इसके हक में, एंड देन अनदर वन कम्स इन. जब ये खत्म करेगा तो दूसरा आएगा, वो इसके अगेंस्ट बोलेगा या उसको काउंटर करेगा. एंड टू स्पीक फॉर द मोशन, आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज हु इज स्पीकिंग फॉर द मोशन, ताबीना बिन्त खुर्शीद. She will be supporting. ध्यान से सुनेंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे आपसे, नो साइड टॉक्स. She will be supporting feminism. आप सुनेंगे फेमिनिज्म, ये इसके हक में बोलेंगी आराम से. Honorable Principal Sir, respect teachers, and my dear brothers and sisters, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to debate on feminism, in which we will know what is this, where it came from, what is its history, is it good, right, or bad, wrong. We will also know what Islam says about it in Islamic perspective, is it right or wrong. So on this important topic, there is another student with me, Simran Khurshid. We will discuss it. So let's first come to understand what's feminism. Feminism is a socio-political movement. It includes the right to vote, run for public office, work, earn equal pay, own property, receive education. Simply, feminism is about all genders having equal rights and opportunities. According to Cambridge Dictionary, the belief that women should be allowed the same rights, power and opportunities as men. Another dictionary, the belief that men and women should have equal rights and opportunities. One who believes and supports feminism is called a feminist. Originating in the West, the word feminist is appeared in France and the Netherlands in 1872, Great Britain in the 1890s, and the United States in 1910,
Throughout most of Western history, women were confined to the domestic sphere, where public life was reserved for men. In medieval Europe, women were denied the right to own property, to study or to participate in public life. At the end, in the 19th century France, they were still compelled to cover their heads in public, and in parts of Germany, a husband still had the right to sell his wife. The first comprised women's suffrage movement, promoting women's right to vote. The second wave, the women's liberation movement, social equality for women. Third wave, characterized by a focus on individuality and diversity. Thanks, have a nice day. She spoke for the motion, हाँ? इसने फेमिनिज्म को सपोर्ट किया. किसी ने कोई पॉइंट याद रखा? Anyone, any student? फेमिनिज्म के हक में इसने बात की. फेमिनिज्म फीमेल से निकला है, फेमिनिस्ट. हाँ, समझ आ गया कुछ? फेमिनिज्म यानी औरतों को हुकूक मिलने चाहिए, इनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए. इसके हिसाब से औरतों को इक्वालिटी नहीं थी, तो फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जिसमें उनको इक्वालिटी का हक मिल गया. ठीक. नाउ टू oppose her views, I would like to call on stage Simran. She will be speaking against the motion. ये फेमिनिज्म के खिलाफ बोली. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise be to Allah, the creator of the universe. Honorable Principal Sir, respected teachers, my dear brothers and sisters, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to thank Tabina. Thank you so much, Tabina. You explained feminism in a good way, what it is, its history and how it's spread, etc. But as far as my opinion, I'm against feminism. When we take it in a Western perspective, they keep religion aside and tell women to do what they want. Islam is based on equality. There is no discrimination. So I'm in favor of Islamic feminism. It aims for the full equality of all Muslims regardless of gender. The Quran teaches all human beings are creations of God from one soul, who are divided into nations and tribes to know each other. And the most honored individuals are those who are the most pious. Our role model, Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha, a great teacher. Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala Anha, great businesswoman. Hazrat Sumayya Raziyallahu Ta'ala Anha, great warrior. Quran gives them education rights, inheritance rights, job rights, etc. But it must be done within the circle of Islam. We have to put Islam first. Therefore, Islamic feminists advocate women's rights, gender equality and social justice grounded in an Islamic framework. Now I conclude with that, we should promote Islamic feminism instead of Western feminism. Still, there are some other issues that only scholars can discuss, in which we have to turn to them. Thanks, have a nice day. So it was a debate between two students. One speaking, हाँ मेरे साथ कौन बोलेगा? One speaking for the motion and the other one against the motion. ऐसा होता है डिबेट. हाँ, जहन में रह गया आपको? इसके बाद है टर्न. There is now it's the turn of Fiza Khurshid, and she will be presenting some beautiful quotes for all of you to think and ponder. जो ये बोलेंगे आप सुनना अच्छे से. मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मोहतरम साथिया किराम, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं 10वीं जमात की तलबा फिजा खुर्शीद आपके सामने आज अपना मौजू पेश करती हूँ, जिसका उन्वान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल दुनिया भर में मशहूर है, जिनमें से चंद ये है. एहसान करके आज़ाद को भी गुलाम बनाया जा सकता है. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें नहीं करनी पड़ती. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया. हज़रत अली फरमाते हैं, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, ना कि वो जिससे दूसरे नसीहत हासिल करे. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
इल्म नीचे को ऊंचा और जहलत ऊंची को नीचा कर देती है। हजरत अली फरमाते हैं, खुशी और गम दोनों अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, लिहाजा खुशी मिले तो शुक्र करो और गम मिले तो सब्र करो। मौला अली फरमाते हैं, 3 चीजें दीन की जड़ है, पाक दामनी, परहेजगारी, हया। मौला अली फरमाते हैं, इल्म का पौधा एक शख्स लगाए तो फल हर किसी को मिलता है। Now it's time for a conversation, and to perform the duties, I would like to call Azhar and Arif. Azhar and Arif Shaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Arif? I am fine, dear friend. What about you? I am fine too. What do you want to do for the coming weekend? Nothing special. But I have a plan. What's that? And Farid and decided to go for a picnic this weekend. Actually, we have also invited Sahil and he will also join us. Wow, I think I should put at least 2 shoes in my bag and a pair of trousers too, right? Right, and contact me on Friday and keep your phone on. Sure, I will be ready. Thanks. Now I have to leave to join the gym. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Well done, Azhar and Arif. Finally, it's turn of Suhaib, and he will check your general knowledge. He will check your GK and he will ask you some questions about current affairs and the world, I think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to ask you some GK questions. Who was the first and only woman Prime Minister of India? Who was the first and only woman Prime Minister of India? Right. Indira Gandhi. Which is the smallest country in Asia? Smallest country by size or population. इसमें लिखा ही नहीं है वो. Smallest by size or population. By size नहीं है ना. Smallest country in Asia by size I think. रुपए के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क एशियन कॉन्टिनेंट का है पता किसी को? No one knows? Maldives. Maldives. Which animal never drinks water in its entire life? Yeah? Right. फिर सब Kangaroo rat. Who was the first president of USA? Who was the first president of USA? Right. George Washington. What is the full form of SIM? सिम कार्ड जो आप सब यूज करते हो, SIM फुल फॉर्म पता है किसी को? मैंने एक दो क्लासेस को बोला है. Subscriber identity module. फिर से एक बार. Subscriber identity module. Subscriber identity module. What is the full form of USSR? जैसे USA है इसी तरह USSR भी होता था, अब नहीं है वो. USSR दोनों में U का मतलब यूनाइटेड है. चलो इतना तो पता चल गया आपको. यूनियन, यहाँ पे यूनियन इसने लिखा है किसी को पता? हाँ? Right answer. फिर से बोलो सब. Union of Soviet Socialist Republics. Thanks and nice day. Thanks, Suhaib. And this was all about class 10's presentation. And I think
with this, the first round of presentation programs has come to an end. It was the first round, as you already know, all of you know, that this whole month has been scheduled for these programs. So there will be another round of these programs from tomorrow only. Tomorrow it's the turn of class first and class 6 together. So form teachers may please note, class first and class 6, they have to prepare their students for presentation. And before taking your leave, let me quote once again Imam Ali alayhi salam. One quote attributed to him is, knowledge is the root of all good. Knowledge is the root of all good. As we say, ignorance is the root of all evil. जहालत बुराइयों की जड़ है. बुराइयों की जड़ों में से एक जड़ जहालत है. तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा है, knowledge is the root of all good. ये जो इल्म है, सब अच्छाइयों की जड़ इल्म है. ठीक? तो यहाँ पे जो आप सुन रहे हैं, ये इल्म ही बांटा जा रहा है. ठीक? तो कल से आप तैयारी फिर से करेंगे. और बाकी स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि वो स्टूडेंट जो अभी तक आगे नहीं आए हर क्लास से, जो पीछे रहते हैं, हमेशा बैक बेंचर्स ही रहना चाहते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इन प्रोग्राम्स में कम से कम आगे आ जाए. हाँ, थैंक यू एंड फी अमान. मंजूर सर के लिए छोटा क्लास कीजिए बेटा, और साथ में क्लास 10 के लिए कीजिए, उनकी गुड